Hey champions, commandos, I Abhinav Negi welcome you all on India's largest live learning platform, that is Gradeup. So everybody, you can watch this on Gradeup Gate channel also and Gradeup Civil Champion also. So in both channels, this is live right now. Okay, many of you are connected. So first of all, everybody, now your gate is over. Okay guys, we are having a post gate analysis as well every day 7 p.m. free class on app. In that we'll be telling you for different students who are getting very good marks, average marks, or not up to their expectation, what they can do further. That we are telling at 7 p.m. on post gate series, my friends, on the app. So I hope everybody is satisfied after their exam. Okay, so yes, my friends, I'm not saying that everybody is getting 80, 90 or 95 or 75 marks, but yes, whatever you have prepared, and I hope you have just transformed that. If somebody is prepared for 60 and he's getting 55 or 60, that's an achievement. Okay, everybody, first let me know on the comment section if my voice is audible and I am visible. Everybody on the comment section. Yes, Himanshu is here. Everybody, please let me know if my voice and video is fine. Okay, now my champions, what is this session about? This is about me. Most of you already know me, guys. I have 9+ years of teaching experience, done my MTech from IIT Delhi in Geotechnical Engineering, got All India Rank 164 in 2012, mentored more than 20,000 students and offline for more than 8,000 hours. Guys, this session will be telling you those questions that have been come from our classes. Of course, if I talk about paid classes, then there is not a single question that was not from paid class. All concepts, all questions were from the paid class. But commandos, champions, I'll be showing you that yes, from the YouTube students, our YouTube audience are also getting benefited, and my champions also, they have got the questions from the YouTube classes. Many of marathon we have taken at the last time, because the Gradeup is always with you till the last, my friends. At the last also, there were many marathons that different faculties are taking, or combined also. Many times we are coming live from the studio. Many questions have been come from the app free series and YouTube. If I talk about paid classes, then every question is from paid class. That's no exception, as always in different years. Atul Pandey, good evening. Hi, Om Prakash Reddy. Guys, just quickly like and share the session with other guys also, so that many everybody can get benefited. Okay, so how's the Josh commands? Everybody just tell me on the comment section. Yeah, come on, like and share the session with everybody, so that more people can join. Okay, I'm again repeating, guys, those who have joined just now, that my friends, if I talk about paid classes, paid courses, then every question was from paid course. Every concept, every question we have deal there. But here there are many questions that have come from our marathon series, that have come from our YouTube sessions, that have come from app free class also. So everybody is getting a Gradeup. Everybody is getting benefit from the Gradeup. Love from Kolkata. Thank you, Avinash, Tandan, Atul Pandey. Okay, everybody is here. Joshit sir is here. Okay, so in two channels you are watching this live, on Gradeup Gate channel as well and Gradeup Civil Champion. So I'll be just showing you some screenshot. There's nothing to prove. There's nothing to prove that we are not here to prove, but we'll be telling you, yes, that please do watch our sessions carefully. The motive is just like that. Watch our sessions carefully, because many questions are coming from free series. The motive is just like that. The motive is not just to prove you, because we already know that you believe us. We already know that you believe us. So nothing is like that proving you, because you are our family from so many years. You already believe in us. So not to prove, but just to show that take our classes regularly, watch it, you will be getting benefited just like that. And first of all, 8 to 8:15 I will be here. Then from 8:15 Anuj sir will be here. Then 8:30 Joshi sir will be here. 8:45 Shubham sir will be here. Then at 9 Krishna sir will be here. Then at 9:15 Ansari sir will be here with those questions. Of course, since we are making the PDF also, we were the first one to give you the live analysis of maximum memory boast questions. That's why I have not get all the screenshots, but yeah, some of the screenshots I can show you. Like okay, before that, this is the post guidance. Many of students are getting demoralized, or somebody are excited also after the exam. So what to do? That for that we are having a series at 7 p.m. guys. Okay, and this is the vision course, guys. Vision is super set of all courses, GATE also, ESC also, technical also, non-technical also.
Okay, so you can enroll in the vision course, which is for GATE, ESC, everything plus test series, everything will be there. Notes, 950 plus hours of live classes which you can watch infinite number of times. Again, 10,000 plus practice question, 100 plus mock test. For any difficulty, you can contact here or you can write us on help@gradeup.co. So vision is launched from today only. Just my friends, I'm starting the session. First of all, please let me know how's the Josh commandos, everybody. Yes, Himanshu Negi, I'm starting. Please just let me know how's the Josh. I'm starting. Okay, so before starting, guys, yes, this is the first question was asked in unit hydrograph. Okay, my friends, I have not taken a single session on this. That area of hydrograph is volume of water. Same thing you have to done here. I have already discussed this on the same day, 6th of February only. 6th of February, just after 30 minutes after exam, I have discussed this and give you the solution that day. Okay, whole solution is available on the YouTube. Whole solution is on the YouTube link now of the post GATE analysis, where we have discussed the solution of the GATE exam. On that YouTube link there is the PDF, so you can watch there. So many times I have said you area of hydrograph is volume of water, area of, not only one time here, here also area of hydrograph is volume of water. This is the area of hydrograph, this is the volume of water. Many times, guys, here also many 3 sessions I am just showing. There are, I think there are more than 10 sessions here of the same thing. Area of hydrograph is volume of water. So the question is asked from there only. And if you want the solution of the GATE exam, then on the YouTube link, also on the app, on the YouTube link where we have discussed the solution now on the same day, there is PDF below there. So you can watch there, guys. Okay, there is PDF below, and in the PDF you can watch the solutions. Those solutions, I am not discussing here solution, guys. Okay, I hope you are remembering this. I have many times I have said you that, even I said you, many of you will remember this, that area of hydrograph is volume of water. 99.9% questions will be coming from this statement. Have you remember this? Have you remember this? Please write down in the comment section that 99.9% questions will be coming from this statement. 3 times I am showing you. There are many others. You can watch this on YouTube. These are all YouTube screenshots, guys. Okay, everybody, yes, everybody remember. Now this next question, guys. Okay, you have to find phi index. Guys, come on, more than 5 sessions I have taken on this throughout the year, where I am discussing the phi index. And in fact, guys, I have told you 3 methods. One was after calculating the W index, then for phi index you just numerator में से minus करना है, time period minus करना है. One was this. Second was just to take assumptions and see whether it is coming on that region or not. Third was from options. So that I already told you for phi index. Detailed solution of this is available on the PDF, guys, that we have already told you. Okay, yes, champions. See, this question was asked, okay, in the morning session in GATE 2021. Just you have to apply this formula, either this or this, you are getting the results. Okay, solution is already available on the PDF, guys. So this was GATE and this was my class, guys. I hope you have watched these classes and you are getting benefited in the GATE exam, guys. Everybody just quickly like and share the session so that everybody can get benefited. Okay, just guys, I'm once again telling you, I'm not here to prove, because we know that you already supported us throughout so many years. You already love, you already have our, you already have your Josh, your confidence on us. So just to show you that yes, our YouTube sessions are very much benefited along with course. Se to sara hi aaya tha yaar. Everything is coming from course. Just to that I'm showing you this. Now the depth of tension crack is asked here. Everything is given here. So this is the depth of tension crack and 2Z0. 2Z0 is the critical height. So same thing you have to apply. This one, 2Z0, I have told you. This was on November 1 and many sessions I have taken here. Same thing you have to apply here, yaar, in the solution. Solution is already available on this. You remember this, guys? Everybody just tell me in the comment section. Now next question. Same question. My friend, not only one time, yaar. This is again, I have told you. So even questions I also told you. Not this 4C by gamma root K. Not only theory, not only derivation also, yaar. Come on. After derivation, also formula also, yaar. So what else, guys? Just take the classes seriously, attend them, yaar. You will be getting benefited, guys. This session is just to show you that you will be getting benefited from our free classes. Paid se to sab kuch hi aaya tha, guys. Okay, so what is the OCR ratio? Just you have to collect present stress and past stress. Okay, same thing I have told you here, yaar. With Inzamamul Haq and Rahul Dravid example also. Do you remember that on our marathon series? I guess Abhi plus Josh series, or with last day Shubham sir also. With Shubham sir also, I have given the example of Inzamamul Haq and Rahul Dravid. To earlier Rahul Dravid, now Inzamamul Haq. Earlier Inzamamul Haq, now Rahul Dravid. To explain you OCR. Same thing you have to apply here, guys.
ओके पेड़ से तो सब कुछ ही आया था. नेक्स्ट थिंग फोर bearing and back bearing. Okay, this was the question. Okay, so same thing was asked here, guys. Four bearing and back bearing differences plus minus 180. Same thing I've written here. This is the complete derivation I've given here, guys. Okay, then it was asked about if something is given in whole circular bearing, find in reduced bearing. Guys, come on, yaar, come on. What you all can expect, guys? This is the same thing, guys. Okay, this was asked in GATE, and that we have done in our free classes. Just take it more seriously, guys. You will be getting benefit from that also. Okay, sir, please say come on once. Come on. Somebody is demanding this. I am fulfilling his demand. Okay, next thing is like this tachometry here. This was tachometry. Okay, I am not giving a solution, guys. Just solution is already available in PDF format in the YouTube link. Do you remember any of these class? Is anybody here who is remembering all these class? Please let me know in the comment section. And for those students who want post-gate analysis, that my number is this, what should I do? My number is this, what should I do? My number is this, what should I do? For them, 7 p.m. the post-gate series is going on, guys, from where you can get benefited. Okay, so next, this is, okay, this, my friends, come on, yeah. I'm not taking any screenshot for this. I'm not taking any screenshot for this, yeah. Come on, this is just a simple hinge. Bending moment at hinge is 0. Many times I've told you, yeah. You will be getting this in many of my lectures, guys. Same thing here, torsions. Tau max is 16 pi d cube. This I have derived in my YouTube class here. Come on, guys. Okay, so not same. Your picture is missing in GATE question. No, GATE question. How my picture will be there? Yeah, my picture will be in my session, na. My picture will be in my session. Okay. Now this was weighted average, most probable value. GATE has asked this. Okay, same thing I wear. If angle A has weight this much. Okay, this has weight this much. So how to find this? Okay, how to find the most probable value, average value of angle A? Which session was most difficult? Harsh Gupta is saying that not much difference, guys. Not much difference. Okay, not much difference between this. Okay, but in morning there is a SOM question that was a little bit typical. Okay, apart from that, both sessions are same. Now this one is yeah, latitude is this, departure is this. Okay, calculate length and closing error. I have done this in MSQ form. Sum of latitude, sum of departure, error I have found out, at direction also behind me I have found out. Okay, so this, which I hope you remember this. Response sheet will be coming in 7 to 10 days, guys. Okay, so I hope you are remembering all these my datas that I have taken. Okay, hydrograph many times, yeah, 3 times I have taken screenshot, many times there was, okay. See, this is just, you have to apply this equation or this equation that I have told you in the free class. 2c by gamma, 4c by gamma, you have to apply this just. I have told you all these things. Even question was there. This I have done in class also, this I have done in marathon session also at the end. Okay, so, okay, Abhishek, that is a good news for you, na? So I hope you are remembering all my these sessions from where the questions have been directly coming, derivation also and this also. Okay, so now this is the February Mela. Not every, but some lucky users in the Gradeup Super, I will be giving them, Gradeup is giving them the excitement, lucky users, the prizes. Hello students, Gradeup is happy to announce the February Mela, जहां आपको मिलेगा मौका to win attractive prizes worth ₹50 lakhs on the purchase of Gradeup Super. आज ही Gradeup Super के साथ अपनी एग्जाम प्रिपरेशन शुरू करें with live interactive courses and mock tests designed by the best faculty and experts, 24/7 doubt resolution and best study material. इसके साथ ही पाएं exciting prizes जीतने का मौका। तो फिर देर किस बात की? आज ही Gradeup Super को सब्सक्राइब करें। So these are our faculties, okay, that have been continuously throughout the year. More than 60+ of students are in top 100 this year. The results we are getting, it is much more than that. From Gradeup Super you can get live courses also and green card also. Okay, so I hope you enjoyed this session, guys. Okay, one, two, no. So my friends, there is one more offer that is running downwards, that 50% discount and double the validity that I missed somehow this screenshot. Okay, now Anirudh sir will be coming and he will be joining you guys just in 2 minutes. Thank you everybody. Prep smart, be safe, go Gradeup. Thank you everybody.
Everybody, am I perfectly audible as well as visible? Please once let me know in the chat section quickly. Everybody, let me know in the chat section whether I am perfectly audible as well as visible, दोस्त इस बार जो लोग मेरे क्लास अटेंड कर चुके हैं दोस्त, धमाका ही हो गया कुछ कुछ सेशंस में। तो जल्दी जल्दी, hello everybody, quickly like the session and hit the like button and share the session with everybody for Gradeup. Hello everyone, and the exciting prize are going on for the 2021 people, right? Everyone, every day you can win some exciting prize like the Galaxy S21, Mi Band 5s, the scooties and the laptops, right? पहला जो दो क्वेश्चंस के बारे में मैं बताऊंगा एक्चुअली, वन इज द मिरर टेक्निक और दूसरा था ये जो है आपका फोल्डिंग पेपर टेक्निक। ये दोनों मैंने बताया था, जो लोग मेरे वीडियोस देख चुके हैं, एक मैंने वीडियोस बनाया था एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन जनरल एप्टीट्यूड, उसमें ये दोनों ही क्वेश्चंस था। एक तो था मिरर टेक्निक, दूसरा था फोल्डिंग पेपर टेक्निक, ठीक है, पहला। दूसरा, अनसपोर्टेड कट, डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट, ये क्वेश्चन तो न जाने मैंने कितने बार करवाया, ठीक है, 4c बाय गामा रूट ओवर के, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 50 मार्क्स सीरीज दोस्त, मेरे ये और कर काम आएगा ही दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था दोस्त, यहाँ पे आपको बोला था ओवर कंसोलिडेशन रेशियो निकालने का, ठीक है। यहाँ पे मैं दो चीजों के बारे में बताया था, मैंने यही प्रॉब्लम करवाया था लेकिन मैं 2 लेयर करवाया था, यहाँ पे 3 लेयर आया। मैं मानता हूं चलो थोड़ा टफ आया, ठीक है। मैं यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन करवाया था 2 लेयर से, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आई हैड डन थ्रू 2 लेयर्स। ओसीआरई निकालना था, बीच में वाटर टेबल था, सेम क्वेश्चन, वहां पे सिर्फ 2 लेयर था, यहाँ पे 3 लेयर दिया, ये फर्क है, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो मतलब आप क्या बोलूंगे इसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल का क्लास लगभग मैंने 3 और 4 फ्री क्लास लिया हूं, यूट्यूब पे भी है, अभी भी देख सकते हो, ग्रेडअप ऐप पे है, देख सकते हो मेरे प्रोफाइल में जाके, यही क्वेश्चंस, इसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दोज आर देयर इन माय प्रोफाइल, ठीक है। उसके बाद आता है ये सर्वे का क्वेश्चंस है, आई हैव डन दिस इन माय क्लासेस, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद ये, और सबसे ज्यादा हद की बात तो ये हो गई बस, ये क्वेश्चंस, कौन सा क्वेश्चन है ये, इसमें तो डिजिट भी चेंज नहीं किया। यही क्वेश्चन मैंने अपने पेड कोर्स में करवाया था, जो लोग मेरे विजन के कोर्सेज कर चुके हैं, हाईवे इंजीनियरिंग जहां पे मैंने पढ़ाया था, ये डिजिट भी चेंज नहीं किया। इफ यू रिमेंबर, अगर आपके पास कॉपी है तो मैं देख लेना, बाकी क्वेश्चन में डिजिट चेंज किया, बाकी क्वेश्चन में डिजिट चेंज किया। ये जो आपके y1 y2 वाला क्वेश्चन है, ऑप्टिमम साइकिल लेंथ एटसेट्रा एटसेट्रा, इसमें चलो डिजिट चेंज है, स्पीड ऑफ व्हीकल इज 80 किलोमीटर पर आवर, रेडियस ऑफ कर्व दिस वन, फ्रिक्शन फुल्ली यूटिलाइज, यही लैंग्वेज से क्वेश्चन करवाया मैंने इन माय 50 मार्क सीरीज, इन माय 50 मार्क सीरीज, जो लास्ट मैंने सीरीज चलाया था ग्रेडअप ऐप में, दैट वाज अ फ्री सीरीज, वहां पे यही लैंग्वेज मैंने दिखाया था, फ्रिक्शन फुल्ली यूटिलाइज, मुझे याद है, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम करवाया हुआ है। सबसे ज्यादा जो मेरे को अजीब सा लगा कि इसमें तो गुरु डिजिट भी चेंज नहीं किया, यही डिजिट से मैंने करवाया था 70 माइनस 0.7 के, और उसी डिजिट से क्वेश्चन आया, गजब हो गया गुरु, ठीक है। देखो, और एक बात, मैं आरसीसी मुझे नहीं आता है उतने अच्छे तरीके से, मैं बता रहा हूँ, मुझे तो मतलब बताने में कोई शर्म नहीं है इस बात की कि आरसीसी मैं उतने अच्छे तरीके से, मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ आरसीसी, ठीक है। लेकिन आप गेट मॉक टेस्ट, जो मैंने 4 मॉक टेस्ट लिया था ग्रेडअप सिविल चैंपियन चैनल पे, वहां पे कृपया जाके देख लीजिए, ग्रेड मॉक टेस्ट 3 एंड मॉक टेस्ट 4, वहां पे जाके देख लो कि 1 और 2 पे भी है शायद, प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट से यही क्वेश्चन, इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन में डाला था कि नहीं डाला था। वहां पे सिर्फ फर्क ये था कि मैं सिंपली सपोर्टेड बीम दिया था, सिंपली सपोर्टेड बीम दिया था, यहाँ पे जो बीम है वो है कैंटिलीवर बीम, तो बस मैक्सिमम मोमेंट का जो फॉर्मूला है उसमें चेंज आएगा। यहाँ पे WL²/8 आ रहा था, शायद ऐसे कुछ मैंने दिया था जितना मुझे याद आ रहा है, और यहाँ पे आया है कैंटिलीवर बीम एट द एंड। यहाँ पे आपको पूछा था क्या, डिटरमाइन स्ट्रेस, ठीक है, तो यहाँ पे वही P/A प्लस ME/Z एक होता है, M/Z, और टॉप पे और बॉटम पे -Z, इस तरीके से जो होता है, इस तरीके से जो भी दोनों चीजें होता है, उसी में से जो मैक्सिमम है वो लिखना है आपको, डिटरमाइन स्ट्रेस, फाइन। अच्छा, ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितने बार करवाया हुआ हूँ, ठीक है। ये जो, और बहुत सारे लोग मुझे बोले थे कि परमेबिलिटी से क्वेश्चन नहीं आएगा सर, मैं क्वेश्चन करवा रहा था, मुझे याद है बहुत सारे लोग ने मुझसे परमेबिलिटी हटा दिया गया है सर, इस बार परमेबिलिटी से क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बोला था परमेबिलिटी से क्वेश्चन वो देंगे,
क्योंकि उसके पास लॉजिक ये रहेगा सर परमिबिलिटी मानो सॉइल में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है वो तो एनवायरमेंट में है, हो सकता है वो हाइड्रोलॉजी में है, सब जगह में परमिबिलिटी है, इसलिए राइट। के बाद ये चीज मैं अपने पेड कोर्स में पढ़ाया हूँ। मैं फ्री कोर्स में ये क्वेश्चन नहीं करा था, लेकिन पेड कोर्स में था ये पायरोलाइसिस और कंबशन। कंबशन को मैं वहां पे इंसिनरेशन बताया था। इंसिनरेशन और पायरोलाइसिस की फर्क क्या होता है? पायरोलाइसिस जो होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इंसिनरेशन खुलेआम होता है, इसलिए इंसिनरेशन करना गलत बात है। पायरोलाइसिस किया जा सकता है, ये भी चीज मैंने बताया था। इंसिनरेशन से प्लास्टिक के अगर इंसिनरेशन कर दूं तो डाइऑक्सिन फ्यूरान टाइप ऑफ कार्सिनोजेनिक गैस निकलता है, ये सब चीज भी मैंने बोला था। उसके बाद ये चीज, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, जस्ट डेटा अलग है। मैंने आपको बोला था कि परमिएबिलिटी की जगह कुछ कुछ टाइम पे हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बोल देता है क्वेश्चन में। those people who have attended my classes, जो कि confined aquifer का फॉर्मूला Q is equal to 2 pi kW into जो भी फॉर्मूला है, ln R1 by R2 S1 by S2, तो वो जो फॉर्मूला है वहां से ये क्वेश्चन करवाया हुआ हूँ 50 मार्क सीरीज में। हाइड्रोलॉजी, फुल रिवीजन ऑफ हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी का मैं एक एंटायर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज लिया था हर एक चैप्टर में। वहां पे जो वेल हाइड्रोलिक्स का चैप्टर था वहां पे ये प्रॉब्लम है, देख लेना आप। ठीक है सर, ये प्रॉब्लम है, देख लेना आप दोस्त, बस डेटा चेंज किया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो गुरु हद ही हो गया। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो आई हैव डन। यहाँ पे मैंने 50 ml के जगह 250 ml लिया था, तभी भी याद है। ये क्वेश्चन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, जो पार्ट 1, वहां पे मैं 2 पार्ट में लेक्चर लेता हूँ विजन में, वहां पे 50 ml के जगह मैंने 250 ml लेके यही प्रॉब्लम करवाया था। सर वेट ऑफ क्रूसिबल है, आफ्टर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेट ऑफ क्रूसिबल इज दिस, रेसिड्यू इज दिस। और मैं बोला था कि जो वॉलाटाइल सॉलिड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, जो 600 डिग्री सेंटीग्रेड में मफल फर्नेस में गायब हो जाता है। वॉलाटाइल कट ऑफ मार्क्स है इस बार 30 के आसपास जाएगा, मान लो 30 to 32 मैक्सिमम। राइट, ये प्रॉब्लम तो गुरु हद ही हो गया। ये भी एकदम सेम ही टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, सिर्फ मैंने जो प्रॉब्लम करवाया था वहां पे मैंने बोला था इस जो एंड वाले लोड है, एंड वाले जो रिवेट है, उसमें आप निकालो, उसमें आप फोर्स निकालो रिजल्टेंट। इसमें इन्होंने बोल दिया ये वाले जो रिवेट है इसमें निकालो, तो इसमें और ज्यादा आसान हो गया। क्यों? क्योंकि देखो F1 तो इसी तरीके से आएगा, और जो F2 आएगा वो भी ससुरी उसी डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, F1 और F2, तो यहाँ पे आपको जो रिजल्टेंट निकालना है दैट इज सिंपली F1 प्लस F2 प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, जो आप लिखते हो यहाँ पे थीटा होता है F1 और F2 के बीच का एंगल। यहाँ पे F1 और F2 दोनों सेमी डायरेक्शन में है। जो लोग मेरे क्लास कर चुके हैं पेड कोर्सेज में, मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ ये चीजें। F1 और F2, F1 होता है एक्सटर्नल जो फोर्स है उसी के डायरेक्शन में, F2 तो होता है वो होता है क्या R, जो रेडियस मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो आप लाइन खींचते हो उसके परपेंडिकुलर होता है। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा हो जाता है 0 डिग्री। तो बेसिकली FR हो जाता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, उसका रूट ओवर कर दो तो F1 प्लस F2। F1 का वैल्यू होता है ये 60, 6 डिवाइड बाय 6 क्योंकि 6 रिवेट है, और F2 का वैल्यू होता है M इंटू आर बाई समेशन आर स्क्वायर। तो ये प्रॉब्लम करवाया हुआ है। ये दो ही प्रॉब्लम आया था बिल्डिंग मटेरियल से, तो ये तो मैं कितने बार करवाया हूँ। जिप्सम इज एडेड इन कंक्रीट मिक्सचर, जो लोग मेरे क्लास कर चुके हैं डेफिनेटली नोज इट, राइट। सबसे बड़ी बात गुरु गजब यहाँ पे हो गया, फाइंड एरिया एनक्लोज्ड यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल। ठीक है, सिम्पसन्स 1/3 रूल से एकदम इसी तरीके से एक प्रॉब्लम सर्वे में आया था पहले, वो प्रॉब्लम मैं करवाया था। सर्वे में आया हुआ एक प्रॉब्लम था सिम्पसन्स 1/3 रूल से, जो मैंने करवाया था अपने क्लास में। जो मैंने बोला था वो इवन ऑड 4 इंटू इवन 2 इंटू ऑड, इस तरीके से जो मैंने बोला था वो प्रॉब्लम आया था। इवन इन द दिस प्रॉब्लम आई हैव डन इन रैंक अप क्लासेस, रैंक अप क्लासेस में ये प्रॉब्लम करवाया हुआ है, चेक कर लो। उसके बाद मैं मैथ नहीं पढ़ाता हूँ, मैथ में मैं खुद भी जो पढ़ के गया था वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। और मैं अपने मॉक टेस्ट में गेट मॉक टेस्ट 3 गेट मॉक टेस्ट 3 फ्री सिविल चैंपियंस चैनल में देख लेना। इसी टाइप का एकदम एक प्रॉब्लम है का, मैं यहाँ पे बस डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस वाई का था, वहां पे मैंने डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 से प्रॉब्लम करवाया था, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम, राइट। अच्छा, ये गया दोस्त आपका मॉर्निंग सेशन। उसके बाद आता हूँ आफ्टरनून सेशन पे। ये फॉर्मूला मैंने कितने बार लिखवाया दोस्त कंसोलिडेशन सेटलमेंट का, कि डेल्टा H जो होता है वो पहले OCS का फिर NCS का। यहाँ पे सिर्फ अलग क्या आया,
अलग आया कि यहाँ पे रिकम्प्रेशन इंडेक्स का नाम ना लिख के स्वेलिंग इंडेक्स लिखा। मैं मानता हूं मैं स्वेलिंग इंडेक्स नाम का उपयोग नहीं किया था, लेकिन मैं नोटेशन यही इस्तेमाल किया था CR। जो मैं पढ़ाया हूँ वो मैं बताऊंगा, एक भी गलत चीज नहीं बता रहा हूँ मैं। जो मेरे सेशन अटेंड कर चुके सबको पता है ये चीज, ठीक है। डेल्टा एच सी एस तो पहले ऐसा इस तरीके से होता था दोस्त, दैट एच नॉट OCS जब तक है तब तक ये CR है, यू नो, 1 - E0 इस तरीके से, लॉग ऑफ, ठीक है, जो भी होता था समथिंग लाइक दैट, यू नो। जो पास्ट था मतलब प्री कंसोलिडेशन पहले पास्ट था, क्योंकि OCS है ना तो पास्ट बड़ा रहेगा, डिवाइडेड बाय द प्रेजेंट रहेगा। फिर H नॉट CC by 1 - E0 log of P नॉट प्लस डेल्टा P by P नॉट, प्रेजेंट बाय पास्ट हो जाएगा। इस तरीके से मैंने बताया था ये चीज, और इसमें मैंने प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाया हुआ था, राइट। आई हैव डन प्रॉब्लम ऑल्सो। अच्छा, इसमें भी K इज इक्वल टू CV गामा W, इस फॉर्मूला के ऊपर ये क्वेश्चन था। ये फॉर्मूला मैंने कितने बार करवाया हूँ आपको पता है, डेफिनेटली आई थिंक यू पीपल नो इट। K इज इक्वल टू CV गामा W, जो मेरे 50 मार्क्स सीरीज था उसमें भी ये है। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग टॉप 10 प्रॉब्लम्स ऑन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, टॉप 10 प्रॉब्लम्स ऑन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, टॉप 12 प्रॉब्लम्स, इसमें भी इस फॉर्मूला के ऊपर मैंने क्वेश्चन डाला था, देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी इंडेक्स तो मैंने पढ़ाया ही था, श्योर हूँ। टफनेस इंडेक्स मैं पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था ये मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। मतलब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करवाया था कि नहीं करवाया था, ये मैं पढ़ाया तो हूँ श्योर, डेफिनेटली जो कोर्स में पढ़ाया हूँ, लेकिन मैं इससे फ्री क्लास में क्वेश्चन लिया था कि नहीं लिया था मैं श्योर नहीं हूँ टफनेस इंडेक्स के बारे में। लेकिन लिक्विडिटी इंडेक्स के बारे में तो मैं लिया ही हूँ 100% श्योर। और इसमें से लिक्विडिटी इंडेक्स अगर आपको मिल जाता है तो आप ऑलमोस्ट बाकी क्वेश्चन भी कर ही लोगे, राइट। ऑप्शन इस तरीके से दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, ठीक है। कुछ लोग मेरे से आर्ग्यू कर सकते हैं सर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का प्रॉब्लम आपने नहीं करवाया था, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट लाया हूं इसका। ये क्लास था एरर्स इन चेन सर्वेंट एरर एनालिसिस, टॉपिक था ये रैंक अप क्लास का बैच था, ठीक है। वहां पे मैं ट्रू वैल्यू और एमपीवी एक्सप्लेन कर रहा था, उसके बाद में यही प्रॉब्लम करवाया एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे मैंने लेंथ और वेटेज में ये प्रॉब्लम करवाया था, यहाँ पे आया वही प्रॉब्लम एंगल और वेटेज के हिसाब से, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम। देखो लेंथ और वेटेज के टर्म्स में मैंने ये प्रॉब्लम करवाया, और यहाँ पे आया एंगल और वेटेज के टर्म पे, फॉर्मूला एग्जैक्टली वही है, सेम फॉर्मूला है, विच इज इनक्रेडिबल, राइट। राइट, उसके बाद लेंथ एंड बियरिंग ऑफ द क्लोजिंग एरर, सेम प्रॉब्लम करवाया अलग डिजिट से, अलग डिजिट से, वो मैंने थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम करवाया था। वहां पे आपको सम ऑफ लैटिट्यूड और सम ऑफ डिपार्चर कैलकुलेटेड नहीं था, विजन बैच 3 में शायद, विजन बैच 3 या विजन बैच 2 जहां पे मैंने सर्वे पढ़ाया है, ठीक है। वहां पे वहां पे जो मैंने प्रॉब्लम करवाया वहां पे सम ऑफ लैटिट्यूड सम ऑफ डिपार्चर कैलकुलेटेड नहीं था, वहां पे हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ा था। यहाँ पे और आसान प्रॉब्लम आया, वहां पे कैलकुलेट करके दिया, ठीक है। फाइन, कितना दिखाऊं मैं तुम्हें बताओ, ये 4 फेज सिग्नल है, ये तो मतलब छोड़ ही दो, अब कितने बार करवाऊं। एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम करवाया मैं, बस डिजिट्स अलग था। चेक कर लो, चेक कर लो। राइट नाउ टॉप 10 प्रॉब्लम्स ऑन ट्रैफिक इंजीनियरिंग, अभी भी पड़ा हुआ है यूट्यूब पे सिविल चैंपियन चैनल पे है। टॉप 10 प्रॉब्लम्स या फिर टॉप 12 प्रॉब्लम्स या फिर ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस, इस तरीके से कुछ नाम है ऑन ट्रैफिक इंजीनियरिंग, चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद ये है आपका कौन सा क्वेश्चन, ये मेरे रैंक अप कोर्स में करवाया हुआ क्वेश्चन है, प्लस गियर अप कोर्स में भी करा हुआ क्वेश्चन है। बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर गिवन, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एग्रीगेट मिक्सेस कितना, ये चीज मैं करवाया हुआ हूँ, राइट। फाइन, उसके बाद ये तो है 90 किलोमीटर पर आवर, मैंने ये भी आपको बोल दिया था, इतना भी मुझे याद है, मैं आपको ये भी बोल दिया था यहाँ पे कि अगर 90 किलोमीटर पर आवर है तो आप उसको डायरेक्ट वो 0.278 मत लो, क्योंकि हो सकता है कि वो ये हो जाए, क्या बोलते हैं, थोड़ा भटक जाए उसके जो रेंज है, क्योंकि ये 18 से डिविजिबल है, तो आप 25 मीटर पर सेकंड ही लो इसको। इतना भी बोला था मैं कि 90 किलोमीटर पर आवर के लिए आप 25 मीटर पर सेकंड लो। आई कैन रिमेम्बर ऑल्सो दैट पोर्शन। अच्छा, मुझे सॉम नहीं आता है, अगेन मैं बता रहा हूँ, सॉम में उतना ज्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। सॉम में उतना ज्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, आरसीसी और सॉम। लेकिन आप चेक कर लो गेट मॉक टेस्ट 3, गेट मॉक टेस्ट 3 या फिर लास्ट मॉक टेस्ट जो 4, सिविल इंजीनियरिंग ग्रेडअप सिविल चैंपियन चैनल में एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम आया, करवाया था कि मैं नहीं करवाया था, फिर सिर्फ वैल्यूज अलग था।
16 t by pi d क्यूब शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है। इसी से ये प्रॉब्लम मैंने करवाया था कि नहीं करवाया था, चेक कर लो एक बार मॉक टेस्ट 3 या मॉक टेस्ट 4 पे। सीजनिंग इन टिम्बर कितने बार करवाया हो पता नहीं, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन ड्यूटी इनटू डेल्टा इज इक्वल टू 864 बी, ठीक है, ये तो पता नहीं। एनवायरमेंट एनवायरमेंट से भी देखो, एनवायरमेंट ये तो मॉक टेस्ट है। ये जो क्वेश्चन है ये मेरे पेड कोर्सेज का क्वेश्चन है दोस्त, ये मेरे पेड कोर्स का कॉन्सेप्ट है कि मैं करवाया हूँ ये थिंग मेरे पेड कोर्स में। द टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द सैंड पार्टिकल्स, द रिक्वायर्ड बैकवॉश वेलोसिटी। बैकवॉश वेलोसिटी मैंने बहुत बार करवाए हूँ दोस्त, वीबी बाई वीटी टू द पावर 0.22 इज इक्वल टू वो जो एनी होता है वो, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रॉब्लम था, दैट आई हैव डन। अच्छा इसमें तो मैं अपनी कहानी भी बताया था, आपको याद होगा, ईडीटीए ईबीटी, इसका तो मैंने कहानी भी बताया था कि ईडीटीए था वो कंप्यूटर साइंस वाले लौंडे, ईबीटी था अपने सिविल वाले लौंडे। उसके जिंदगी में पहले बाहर आया था तो वाइन वाइन चल रहा था, वाइन रेड, उसके बाद फिर डार्क ब्लू हो गया जब प्लेसमेंट आया, फिर मैं पूरा ऐसे कहानी बना के बोला था ये, और वही क्वेश्चन आया। ये तो मैं बहुत बार बोला हूँ मेरे क्लासेस में, 2 लोग मेरे क्लासेस कर चुके हैं डेफिनेटली। अच्छा ये तो गुरु गजब ही हो गया, यही क्वेश्चन मैंने इसी टाइप ऑफ डाला था, यू नो। सिर्फ वहां पे देखने वाले बात था, मैं यहाँ पे 1 आवर दिया था, वहां पे इन लोगों ने 30 मिनट्स का इंटरवल दिया। दैट इज द ओनली चेंज दे हैव डन, राइट। उसके बाद ये क्वेश्चन भी करवाया था ट्रायंगुलर शेप, जो मेरे हाइड्रोलॉजी सीरीज अटेंड कर चुके हैं, हाइड्रोलॉजी सीरीज, वहां पे ये प्रॉब्लम है हाइड्रोग्राफ जहां पे मैंने करवाया था, टॉप प्रॉब्लम्स ऑन हाइड्रोग्राफ देख लेना, ठीक है, ऐप पे। डिटरमाइन द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन, क्रिटिकल डेप्थ मैंने अपनी इरिगेशन क्लासेस में 100% लिया हूँ, 100% से ज्यादा कॉन्फिडेंस से मैं बता रहा हूँ कि इरिगेशन इंजीनियरिंग में ये चीज मैं ले चुका हूँ, क्रिटिकल डेप्थ का फॉर्मूला। इवन मैं एक प्रॉब्लम भी करवाया था जहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ के साथ साथ कुछ उसका ये चल रहा था, क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिकल डेप्थ और आई थिंक वेलोसिटी हेड दोनों में कनेक्शन था, वो प्रॉब्लम मैंने करवाया था। यहाँ पे तो डायरेक्ट पूछ दिया, चलो सही है, फाइन। उसके बाद मैथ, अगेन मैं नहीं पढ़ाता हूँ मैथ, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम देख लेना ना एक बार, गेट मॉक टेस्ट 1 और गेट मॉक टेस्ट 2 में एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम मैंने डाला था कि नहीं डाला था, एक बार जरूर आप ग्रेडअप सिविल चैंपियन यूट्यूब चैनल पे अभी भी है, देख लेना। मुझे अगेन मैथ में नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन गुरु ये प्रॉब्लम जो है ये लास्ट में जो हम 3 लोग मॉक टेस्ट मिलके लिए थे ना, जो अभिनव सर, जोशित सर और मैं, वहां पे मैथ मेरे पार्ट में था, वहां पे देख लेना कि आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग ये प्रॉब्लम मैंने करवाया था कि नहीं करवाया था, ठीक है। तो यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड बॉस व्हाट इज इम्पोर्टेंट, राइट। तो इसी तरीके से अगर आप हर कोर्स के बारे में जानना चाहते हो तो ज्वाइन करो ग्रेडअप। तो दोस्त सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि हम जो पढ़ा चुके हैं, सबसे बड़ी बात है यही कि आइदर इन द पेड कोर्सेस और इन द फ्री कोर्सेस एवरीथिंग ऑलमोस्ट केम। मैंने आपको कितना क्वेश्चन दिखाया दोस्त, हाउ मेनी क्वेश्चंस आई हैव शोन, 40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस आर कॉमन दोनों मिलाते हुए। तो एक एक सेशन में अगर मैं बात करूं, मॉर्निंग सेशन में मैं अपने बारे में सिर्फ बोल रहा हूँ, सिर्फ एक फैकल्टी के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है, बाकी तो इतने सारे फैकल्टी सब आके बोलेंगे। तो सिर्फ मेरे पार्ट में मॉर्निंग सेशन में 23 क्वेश्चंस वर कॉमन, एंड in the evening session 16 questions were common, in the afternoon session 16 questions were common। एकदम कॉमन आया है, जस्ट डेटा चेंज करके। मॉर्निंग सेशन में तो मैं बोला कि आदि हो गया, एक क्वेश्चन ट्रैफिक इंजीनियरिंग का, वो डेटा भी वही आया 70 -0.7 के, वही डेटा से मैं करवाया था क्वेश्चन। तो
you can definitely join Gradeup Super to be one of them, the successful students in 2021. So next up is Krishna sir. दोस्त मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त, जो ये मैं प्रॉब्लम करवा चुका हूँ, जो लोग मेरे 50 मार्क सीरीज एंड गेट का जो कोर्सेज, स्पेशली द विजन कोर्सेज, दोस पीपल हु हैव अटेंडेड, इट्स बीन ट्रेमेंडसली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ देम। स्पेशली 50 मार्क सीरीज का तो मैं बहुत सारे तारीफ सुनाऊं, एंड ऑल्सो द विजन कोर्स का, क्योंकि दो प्रॉब्लम एनवायरनमेंट का एकदम विजन बैच से आया है, जो बहुत कम लोगों ने किया है, लेकिन वो विजन बैच के जो स्टूडेंट्स है उन लोगों के लिए था। वो लोग एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम था, एक में 50 ml से आया क्वेश्चन, वो मैं 250 ml का करवाया था, और दूसरा कंबशन पैरालिसिस का प्रॉब्लम था, वो भी एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम में करवाया था। सो जस्ट अटेंड आवर कोर्सेस, द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स इन इंडिया by the best pool of faculties in India. Right now, the February Mela is going on. You have also the chances to win exciting prizes like Galaxy S21 and the Redmi Band 5 laptops and scooties. And those Vision, जो हमारे जो कोर्सेस है वहां पे भी बहुत सारे आपको डिस्काउंट्स मिलने वाला है। 12 months if you are appearing for, आपको फर्स्ट मंथ में 8,000, सेकंड मंथ में 1 rupee and थर्ड मंथ में 10,000 rupee EMI देना होगा। So the total EMI is coming as 18,001 only. Similarly, for 24 months you have to pay only rupees 25k, which is incredibly low by the best pool of faculties in India, who all are from in IITs and ISCs. So over to our next faculty, respected faculty, uh, Joshit sir, I guess, yeah, who will be teaching and who will be telling you that which questions have come from the topics that he had taught in the different batches. So let's give it up for Joshit Singh sir. Okay, thank you everybody. This is Anirudh Roy signing off from the largest live learning platform of India. Thank you. So, hello everybody, good evening. My name is Joshit Singh and welcome to Gradeup, India's largest live learning platform, no doubt why. So, hello everyone. Just please let me know if I'm audible and visible to each one of you, and then I'll start my part. And quickly tell me in the comment box that how are you all? Are you ready? Are you ready for this session? And yes, I can see a lot of hearts over there. So, everybody, can you please tell me if I'm audible and visible? And then I'm going to begin this session. Everyone, so finally game over, Hanji. Exam is over, and whatever you have prepared or whatever we were trying to tell you, काम आया या नहीं आया, that we are going to talk about in this particular session. So full power के साथ, just let me know in the comment box that how are you all. If you all are doing superb, just send me your heart sign in the comment box please, and hit the like button as soon as you are joining the session, and subscribe the channel if you are new to the channel. Acha. So guys, do you remember, I'll just quickly introduce myself to those who are watching me for the first time. So guys, my name is Joshit Singh. I have 3 years of teaching experience, MTech from IIT Roorkee, GATE multiple times qualified, and area of expertise, transportation, fluid mechanics, irrigation, and environmental engineering. So let's begin this session, right? So the story begins from this particular question. Guys, you know what you have to notice? Just notice the सेशन टॉपिक, ठीक है? क्या टॉपिक है सेशन का? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम हाईवे अंडर अभी एंड जोश सीरीज. अभी एंड जोश सीरीज. द क्वेश्चन यू सी हियर, द क्वेश्चन यू सी इन गेट एग्जामिनेशन. वन क्वेश्चन गिनते रहना, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ओनली वन सेशन, from only one session, that is your most expected questions, right? Question number 2, again this is morning session and this is evening session question. So guys, this is morning session and this is evening session question, and both are based on Webster method. Again, most expected question from highway, same session. कितने? From same session how many questions? 3. एक सेशन से अभी तक 3 क्वेश्चन आ चुके हैं. बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड. नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेंडेड द अभी एंड जोश सीरीज? किस किसने अटेंड करी थी पूरी की पूरी अभी और जोश सीरीज?
बस इतना मुझे बता दो. And I have not talked about any other topic, any other session, any other paid session or any other YouTube class that I have took. Right now I have just talked about the first, the only and only Abhi and Josh series का एक class that is most expected question from your highway engineering. So right now क्या बोला मैंने, एक वीडियो में से 3 क्वेश्चन आया, ठीक है, एक वीडियो में से 3 क्वेश्चन, रुक जाओ. Okay, then next summit curve and valley curve, दोनों में I have told you guys clearly, it is mentioned that in vertical curve you are going to use which particular curve? You know it, parabola, as I have shown you. Like summit curve बताया तो भी, valley curve बताया तो भी, I have told this one thing. It is clearly mentioned over here, and it is 1 घंटे में हाईवे का रिवीजन that is under Abhi and Josh series. And again, okay, before I go further, Vision 2022 batch is for those students who want to prepare for GATE and ESE 2022 guys, and you can have live classes, you will be having practice questions, so many things. And also guys, right now under February Mela, you are having this amazing offer where for same amount of money, for same amount of Gradeup Super subscription, you are getting double duration, double subscription. Okay, for same amount you will be getting 14 month, for same amount you will be getting 18 month, for same amount you will be getting 2 years of subscription. This is an amazing opportunity. If you want, you can use this particular opportunity. Link is in the description. Next, speed and study. Speed study, I have told you last night. ये क्या है ये? Late night. Do you remember midnight series? Everybody, do you remember midnight series? Spot speed 40, 45, 60, 65, 80. Calculate the space mean speed. क्या बोला? Space mean speed. मैं क्या बोला इधर? Space mean speed. Example भी लिया. I have considered the example also in front of you. Also, मैंने तो आपको एडवांस बताया था, मैंने तो आपको ये बताया था अगर फ्रीक्वेंसी भी दी हो, यहां तो फ्रीक्वेंसी भी नहीं दी थी. राइट, हियर इन द एग्जामिनेशन फ्रीक्वेंसी वाज नॉट गिवन. डायरेक्टली क्वेश्चन बोल दिया कि हाँ भाई एक व्हीकल इतने पे, दूसरा इतने पे, तीसरा इतने पे, चौथा इतने पे. दे हैव नॉट गिवन यू फ्रीक्वेंसी. I have given you the example of frequency right here. Space mean speed, as you can see over here. Right है, full power के साथ set है. Super elevation, क्या लिखा है क्वेश्चन में? The question which appear in your GATE examination. Determine the super elevation considering that full lateral friction has been developed. क्या बोला? Determine the super elevation considering that full lateral friction has been developed. क्या लिखा है इधर? Calculate the super elevation required if full lateral friction is assumed to develop. इतना सेम, हाँ इतना सेम होगा. राइट, सुपर एलिवेशन प्रॉब्लम, हाईवे इंजीनियरिंग, गेट सिविल इंजीनियरिंग 2021. लाइक्स देख सकते हो, 202 लाइक्स है. आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रैफिक वॉल्यूम. अगेन लेट नाइट ट्रैफिक इंजीनियरिंग, मिड नाइट सीरीज भाई साहब. लेट नाइट ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्लास में से आ गया ये, तो मिड नाइट सीरीज से आ गया. एक और क्या बोला था? This is the question which appear in GATE examination. Relationship between traffic speed and density is described using a negatively sloped straight line. If VF is the free flow speed, then the speed at which the maximum flow will occur. Velocity, density, negative slope, right? Corresponding to this, volume and velocity. Maximum volume किधर मिल रहा है? VSF by 2. करेक्ट आंसर डी. सेट, फुल पावर. समझ आया बात? ओके है, बहुत ही अच्छी बात है. आगे बढ़ेंगे. नाउ फ्रॉम मोस्ट एक्सपेक्टेड वाला सेशन वी हैड 3 क्वेश्चंस. फोर्थ क्वेश्चन इज हियर फ्रॉम द सेम सेशन, ओनली एंड ओनली सेम सेशन. एंड सेशन इज ऑल्सो नॉट ऑफ 2-3 आवर्स. सेशन इज ऑफ जस्ट कितना? ओनली यहां पे लिखा है 1 hour and 4 minute का सेशन है. जस्ट 1 hour and 4 minute. एंड इन दिस सेशन, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन 4 क्वेश्चंस आर कमिंग. देख लो भाई, 319 लाइक्स ऐसे ही नहीं है. राइट, ओके, सेट है. 3500 व्यूज अलग से. राइट, ओके. नेक्स्ट, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर एंड रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन. This is what I have told in my Gear-Up batch which I took in my paid courses, right?
Clearly I have shown you. And not many bol raha, I'm not saying that only hydraulic radius if would have come then you would have got the answer. I have told you each and everything, area, perimeter, top width, hydraulic radius, hydraulic mean depth, that is characteristic length also, and Froude number as well for both the cases. Aapka rectangle ka bhi, triangle ka bhi, and trapezoid also I have considered, right? In this is from your paid course of Gear Up batch students know this. If someone is here, they can know, right? Next, kinematic viscosity is dimensionally represented as, again, I think wherever I have took this topic, wherever I have took this topic, I have always mentioned this one thing: meter square per second. As you can see, L square by T is the answer. That is T. Again, taught already, right? Already taught you. Next, calculate the ratio of vertical force by horizontal force. One difference is there, that the water level was extra 1 meter high in gate examination, but the similar question we have solved in our Gear Up batch, where the same thing we have done, we have determined the horizontal forces. As you can see, horizontal FH1 we have considered, right? FH1 we have considered, FH2 we have considered, and also the vertical force I have done, right? In this question, only one difference was there. First, it was 1 meter high, and weight of the cylinder was also given. You just had to subtract that from your vertical force, because of this liquid here, water was there, so vertical force will appear in upward direction. I have told you also, guys, on the YouTube channel, that there are two conditions whenever you are talking about curved bodies. You have to consider these two things, two cases. First, the water is supported by the object, or the object is supported by the water. This particular thing tells us that the vertical force will be either downwards or upwards. I have explained this, you can watch, and here directly you can see I have done the calculation also. It was a big numerical, right? This is from Gear Up batch of this is again a paid course, right? Next up, okay, kitne ho gaye the from most expected questions, guys? From most expected question wale session se how many questions we have done? We have 4, I think, right? 4 till now, 4. Fifth. Why I am saying fifth? When I was explaining this, you can see most expected question highway engineering, and see the bar, the time is stopped at 9:15. If you will go at 9:15, the session is at 21st December 2020. If you will go at 9:15, what you will hear is, if you are having the deceleration in the question, then you can determine the value of F with the help of this relation. Do you remember this? Gradeup Civil Champion students, quickly tell me, kiya hai kya nahi kiya? Agar is question mein, if in this question you knew this small thing, nothing else is required, because see, in this question deceleration is given to you, right? F is not given. Deceleration is given to you, velocity is given to you, and you know that V into TR plus V square by 2G. F, if you know, V, you know, right? Reaction time you have to find out. Again, in V square by 2G, V, you know, it is given as 90, which is 25 meter per second, and the value of G is 9.81 given in the question. Rest, why deceleration is given. So if you have heard this statement of mine where I have said that F is equals to A by G, you would have done this question. How many of you have attempted this question? From the most expected question, only one session and 5 questions. One session, 5 questions have been asked. एक ही से सेशन का नाम जस्टिफाई कर रहा है यार, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ऐसे ही नहीं हवा में, राइट? Okay, now determine the critical depth for rectangular channel section if width 6 meter and discharge 20 meter cube per second. Gear Up batch students, are you here? If you are here, you can see this, right? So I have clearly told this one thing in my paid course, that critical depth for rectangular channel section can be determined with the help of this relation. You had everything, okay? You have everything, and now what you had to do, you just had to put the values, right? After me, Shubham sir will be here. I'll be telling you, right? And now the one thing, guys, hit the like button first of all, and I think there should be no question on the credibility now, right? And other than this,
as you know already about the vision course is there. If you are preparing for GATE and ESE, guys, you'll be getting every technical you can say. And guys, whatever I have told in this, most expected question, same thing I have discussed in my paid classes, right? It is not like that कि भाई YouTube पे बता दिया, paid वालों को तो बताते ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. We have discussed this in paid classes also, and YouTube also, right? YouTube also we have discussed in the end, right? So guys, it's time when I have to say goodbye. So Ninja, it is a goodbye from Ninja, but now Shubham sir will be joining you in any moment to tell you the questions from his particular subject. Everybody just send the heart sign if you are full power enjoying this particular session. Thank you so much. I'll be leaving you with Shubham sir, and now Shubham sir is going to join you. Thank you so much everybody. See you at 10 p.m. I have another session on Gradeup app where I'll be discussing the basic difference between GATE and ESE. कब? आज रात 10 बजे Gradeup GATE YouTube Gradeup app पर, ठीक है? Thank you so much. I'll see you soon. Hello, how are you guys? I hope you all are doing great. And I am Shubham Agarwal. Maybe you might not be knowing me because I am not so frequent teacher of your few in GATE, but I mostly teach you for AE and J examinations. And we have seen that many of the questions were asked from our classes also, and we have got a student review from our students. One of our students, Swan, emailed me that most of the questions he studied in our soil and transportation classes. He had got those questions, and one of the questions was from effective stress, other question was from properties of the soil, and let's see what kind of questions they were. So we if you are moreover interested with GATE, you are learning that with us, and you can learn AE and J examination preparation with us also, and be the best version of yourselves. So we did a question over find out water void ratio, porosity, moisture content, degree of saturation, and I gave you the wet density. This time what they have done is just they have given the opposite question. I told you this question in the class. The question was they gave you the moisture content, they asked you the wet density. I gave you the wet density, and I asked you the moisture content. So the hierarchy of the question was different, but the concept was quite same in the examination. As second question was from effective stress, and they asked you to calculate the over consolidation ratio in first and second condition. From the past and present condition, you have to just divide the OCR value. So now we have got this also, and if you can see both the conditions, I also told you two methods. One was the analytical method, which we generally use in our classes, which I told you with the help of analysis we did, and we drew the diagram of stress distributions in different cases, total then effective stress, then pore water pressure, and first and second condition. Then what we did, we just calculated the present and past condition, and we divided the value, and we got the over consolidation ratio. I told you this question in our foundation classes, and this was the question in the examination. Just what they have done is they have given one more step is over consolidation ratio. Okay, I told you this question in two steps. They asked in only one step. So this was I can say a great opportunity that you did the question in the class, and you were able to see that question in the exam as well. Third question was from to retard the initial setting time of the cement, and it was given. I told you this question in the class that which element or the compound is used for retarding the initial setting time. So answer was gypsum, and they asked you the question that gypsum is added in the concrete. So again in reverse order they asked you the question. So most of the questions in my classes were in A to B, so they were asking a B to A. Okay, so but the concept was quite same, and the answer was again prevent the quick setting time. So basically it is working as a retarder. Another question was from softening point, that I gave you the question in the class, that softening point of soft coal tar pitch with the specific gravity of 1.25 is. So I told you different types of pitch, soft pitch, medium pitch, and I told you the softening point will be 45 to 55 degrees Celsius. Degree Celsius means temperature. Now what they have asked a simpler version of it. The softening point of the bitumen has the same unit of temperature, viscosity, time, mass. So you get the answer is temperature.
So we did this all question in our again foundation classes. All the questions that were in the examination were basically from our foundation classes. All the classes were foundation classes. Next, this was the softening point, and I told you that we'll do this. We basically do this test from the ring and ball apparatus, and the measurement of unit is nothing but temperature. Yes or no? Yes. And the next question was in the examination on Simpson's rule. You have to calculate the value basically on the Simpson's rule. So I gave you two questions. One was based on that identify the formula, and the second question was I made or I gave you the numerical question in the class. Yes or no? So numerical question was also given, and with the help of numerical question we find out the formula value. So this was also asked in GATE paper this year, 2021. So this was also a great opportunity for you. And this question was also done in our survey class. Yes or no? This was not exactly that question that which we did in the class. I told you that pennymeter is used for measuring area. These were some the points we discussed in the class. They generally what they have done is they have combined that points throughout the survey, and they have given in one question. So basically, all the points of these question was also asked were done in our classes. All the AE and JE classes we have done all the questions. Yes or no? This question also we did in our classes. I gave you MV and CV value, and I asked you the ratio of K by KB in our class. Yes or no? And they give you the void ratio, change in effective stress, and this was also a question we did in our class. So just what they have done is they have given the question in different form just. Okay, yes or no? So they have given you the void ratio value. So change in effective stress, you can find out the value of CV from this equation, from the value of change in effective stress and change in void ratio, and that CV value can be used to find out the value of ratio of permeability. Yes or no? Or you can find out the value of CV1 by CV2. So the question was same, the concept was same, but the question they have asked in some different way, but the question and the concept was totally same. Yes or no? Yes. And next question was from we did this question in our class. An unsupported excavation is made in score of SSCJE to make the maximum possible. What is the maximum possible depth to which you can excavate the soil? So we name it unsupported depth of critical cut 4C by gamma under root K. We did it in the class. Yes or no? They also asked the same question. What is the maximum depth of an unsupported cut? So just you have to find out the value of K, and then you can find out the value of unsupported cut. That was 4C by gamma under root K. Yes or no? So if you are preparing for GATE examination, JE examination, AE examination, you can prepare on Gradeup as well. Yes or no? Yes. Okay. So if you are preparing for GATE 2022, just you can go on Gradeup application, and you can enroll in the courses Vision course for ESE and GATE, which has started from 8th of February. Yes or no? Yes. So you can use the code GATE 2021 and avail the discount up to 50%. Actually, up to not flat 50%. Yes or no? Yes. So are you ready? So let's and daily classes are on our Gradeup AE and JE channel. One of our channel is Gradeup AE and JE, and you can or if you're preparing for AE and JE, then you can do that class daily 9 p.m. So it's time to 9 p.m. I will move to our Gradeup AE and JE channel. हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग? सो दोस्तों, नो डाउट आपका गेट का पेपर बहुत ही बढ़िया गया होगा, बहुत ही अच्छा गया होगा, होप सो। और आप लोगों ने ग्रेडअप के साथ जो प्रिपरेशन करी थी बच्चों, उससे आपको फायदा भी मिला होगा। तो बच्चों, यहाँ पर नो डाउट हम लोग यहाँ पे ये चीज नहीं बताने के लिए आए हैं। वी आर नॉट हियर टू प्रूव वॉट एवर वी हैव टीच यू, मतलब हमने जो आपको पढ़ाया ये सिर्फ प्रूफ नहीं है कि बच्चों हम लोग यहाँ पे जो पढ़ाते हैं वही आता है, ऐसा कुछ नहीं है जी। इट्स जस्ट अ नॉलेज, मतलब जो हमने नॉलेज आपसे शेयर करा है उस नॉलेज के थ्रू आपको अपनी मंजिल मिल जाती है, ये हमारा एम होता है बच्चों, राइट? So guys, I will show you some of the questions from the environmental engineering and engineering mechanics. No doubt मैं RCC और structure analysis भी लेता हूँ, but I will show you the questions of environmental and engineering mechanics. No doubt बच्चों, सिर्फ questions देखने से बोर नहीं होना है, we have to learn something, right? तो दोस्तों चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। My name is Krishna Kumar Yadav. I think all of you know me.
and I had 8-year teaching experience in this particular field. I had done my masters from IIT Roorkee. I mentored almost 14,000 plus students for these examination. And basically, guys, I am dealing with these type of subjects like environment, structure, RCC, and engineering mechanics. तो यार सबसे बड़ी कहानी तो ये थी कि आई विल शो यू द क्वेश्चंस गाइस. ये तो समझ में आना ही है, बट सबसे बड़ी कहानी ये थी बच्चों, इन द लास्ट ऑफ द फ्यू डेज, मतलब कुछ आखिरी दिन में बच्चों मैंने आप लोगों के लिए एक मैराथन सेशन रखा था जो कि न्यूली एडेड टॉपिक पे था. और ये सबसे बड़ा गेम चेंजर हुआ क्योंकि इवनिंग के सेशन में 2 क्वेश्चन फंस गए वाइब्रेशन से. एंड आई विल शो यू कि मैंने कहां कहां पर फ्री सेशन के अंदर ये चीज प्रोवाइड करी थी और बच्चों को फायदा भी हुआ. आई विल शो यू गाइस. ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ शिफ्ट 1 गेट 2021. शिफ्ट 1 का प्रॉब्लम था बच्चों, इट इज अ वेरी वेरी बेसिक प्रॉब्लम. जस्ट यू हैव टू फाइंड दी हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ वोलेटाइल सॉलिड्स टू बी देयर. नाउ लेट मी शो यू वन प्रॉब्लम गाइस. एक प्रॉब्लम आपको दिखाता हूं, ये देखिए. This is the problem, exact problem which I have solved in the vision batch. ये vision batch और app free class दोनों के अंदर मैंने सॉल्व करवाया था बच्चों, to find out the concentration of what? Your organic fraction. Now what do you mean by organic fraction? Organic fraction का मतलब क्या होता है? You know that what is organic fraction? It is volatile solid concentration. तो बच्चों ये volatile solid concentration का ही पूरा एग्जाम्पल था और हमने इसको बहुत डिटेल में करा था, राइट? ऐप फ्री क्लास में भी कराया मैंने इसे, आप और आपका विजन बैच में भी इसको मैंने कराया था, ठीक है? और देखिए ये सबसे बड़ा चेंजर था भाई. ये क्वेश्चन आप लोगों को सबको नया लगा होगा एंड नो डाउट गाइस आप लोगों को मजा भी आया होगा इस क्वेश्चन को देख के. बट आई विल शो यू कि मैंने कहां कहां इसके कंसेप्ट के बारे में ना गुंजा हूं. बहुत गुंजा है जी इस कंसेप्ट के बारे में और आपको पता भी होगा. मैं आपको दिखाता हूं. ये शिफ्ट 2 का प्रॉब्लम था बच्चों. इन शिफ्ट 2 यू हैव 2 प्रॉब्लम फ्रॉम द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. एक तो ये था और एक और प्रॉब्लम था बच्चों, दिस वन, राइट? इन बोथ द प्रॉब्लम जस्ट यू हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी. आपको फाइंड क्या करना था जी? फ्रीक्वेंसी. यू हैव टू जस्ट फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओवर हियर. आपको यहां पे फ्रीक्वेंसी निकालनी थी. ये आपको दिख रहा होगा बच्चों ऑप्शन, दीज आर द ऑप्शंस. आपको यहां पे दिख रहे होंगे, यहां पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी थी. सिमिलरली यहां पर भी आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी थी. नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी थी. और मैंने आप लोगों के लिए ग्रेडअप सिविल चैंपियन यूट्यूब चैनल पे मैंने पूरा का पूरा न्यूली एडेड टॉपिक पढ़ाया था और जिद से पढ़ाया था कि मुझे पढ़ाना है क्योंकि बच्चों का रिक्वायरमेंट है और बच्चों का हो सकता है कि यहां से क्वेश्चन मिल जाए एंड डेफिनेटली दे आर एबल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, तो देखो यार मैंने कहां कहां नहीं बताया. ये देखो, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द सॉल्यूशन. एक ये सॉल्यूशन है बच्चों. मैंने मिक्स्ड मैथ सीरीज लिया था, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर प्लस आरसीसी. आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दिस पर्टिकुलर सीरीज. तो हम लोगों ने बच्चों उसको ऐप फ्री क्लास में किया था जिसके अंदर मैंने इसे एमएसक्यू टाइप का प्रॉब्लम बनाया था और मैंने दोनों कंसेप्ट बताए थे. देखो यहां पे कंसेप्ट क्या था? यहां पे कंसेप्ट आपके पास था, यू हैव टू कंसीडर दिस पर्टिकुलर मेंबर एज अ रिजिड मेंबर. रिजिड का मतलब क्या हो गया जी? इट मींस द EI इज इक्वल टू हाउ मच? इंफिनिटी. EI इज इक्वल टू हाउ मच? इंफिनिटी. दैट मींस रिजिड. इसका मतलब होता है रिजिड. बट गाइस यहां पे देखो, मैंने दोनों चीज कंसेप्ट बताई थी. ये एक MSQ प्रॉब्लम था एंड वी हैव सॉल्व दिस MSQ प्रॉब्लम व्हेन EI इज इक्वल टू 0. यहां पे EI इज इक्वल टू 0 लेके बताया, तो मैंने बताया था डेल्टा कितना आता है, ये भी समझाया. उसके बाद मैंने इसी सीरीज के अंदर ये भी चीज समझाई थी कि जब EI इज इक्वल टू इंफिनिटी आएगा, व्हेन यू विल गेट द EI इज इक्वल टू इंफिनिटी ओवर हियर, हाउ यू विल गेट द फोर्सेस, हाउ यू विल गेट द डेल्टा. कैसे डेल्टा कैलकुलेट होगा? दिस इज 6EI डेल्टा अपॉन h स्क्वायर, 6EI डेल्टा अपॉन h स्क्वायर. तो एक मेंबर के लिए कितना फोर्स? 12EI डेल्टा अपॉन h क्यूब, राइट? ये देखिए ये निकाला है, ये निकाला है. एक मेंबर के लिए आ गया, दो मेंबर के लिए आ गया, तीसरे मेंबर का भी ऐसे होगा. और यहां पर बच्चों जब हमने इस प्रॉब्लम को देखा ना, तीनों मेंबर की मुझे स्टिफनेस मिल गई थी. तीनों मेंबर की, इसने ये दिया हुआ था फिगर, तीनों मेंबर की स्टिफनेस मिल गई. और बच्चों अल्टीमेटली आपका सॉल्व हो गया प्रॉब्लम क्योंकि आपने यहां पर ये कंसेप्ट सीखा था मुझसे. ठीक है, और देखिए, और देखिए बच्चों, ये देखिए फ्री वाइब्रेशन, ये हमने YouTube पे करा था सेशन और इसके अंदर मैंने पूरा एक टोटल प्रॉब्लम कराया था. I have completed one problem in which we have to find the static spring deflection, natural frequency in both radian per second and cycle per second, time period, equation of motion, maximum velocity, maximum acceleration. मैंने सारे टाइप के कंसेप्ट यहां पे रखे थे. And guys, we have solved all the things. You can see here how to find the natural frequency in terms of radian per second, how to find the natural frequency in terms of what? Your
हर्ट्स, ये मैंने कंसेप्ट सिखाया था और बच्चों को बोला भी था जस्ट यू हैव टू पुट दी स्टिफनेस ओवर हियर एंड हाउ टू कैलकुलेट स्टिफनेस, ये कंसेप्ट मैं आपको यहां पे सिखा चुका था जी, मिक्स मैथ सीरीज के अंदर, राइट। ओके, तो ये तो भाई ट्रेजेडी हो गई, मतलब इसका मतलब है हमारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रिलेट करता है, कंसेप्ट रिलेट करता है, एंड वी हैव प्रैक्टिस मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस। और मैं हमेशा बच्चों को एक ही चीज बोलता था, जस्ट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द डिफिकल्ट टाइम। सबसे कठिनाई वाला जो समय होता है ना, उसकी तैयारी कर लो जी, क्योंकि हो सकता है आपकी एग्जाम आसान हो, मॉडरेट हो और डिफिकल्ट हो। तो आपकी एग्जाम इस बार मॉडरेट निकली है ना, क्योंकि अगर आपकी तैयारी डिफिकल्ट सिचुएशन की रहेगी ना बच्चों, तो नो डाउट आप कोई भी चीज या कोई भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, है ना गाइस। सिमिलरली आई हैव taken this particular question also in the my note itself. You can see here this is shift 1 problem, ये गेट 2021 के अंदर shift 1 प्रॉब्लम के अंदर आया था। बस एक बेसिक सी बात पूछी थी, लिक्विड फॉर्म किसका, पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट का। नाउ यू कैन सी हियर दिस इज माय नोट्स ऑफ विजन कोर्स, ये विजन बैच के कोर्सेज के नोट्स है। यू कैन सी हियर गाइस वी हैव कवर्ड दिस पर्टिकुलर टॉपिक लाइक what is liquid particle, mist, fog and spray, like these things, right? So already I have told you what is the basic idea of liquid particle. हमने आपको ऑलरेडी बता रखा था भाई लिक्विड पार्टिकल का बेसिक चीज क्या है ना जी। तो यहां से भी नोट से भी क्वेश्चंस आते हैं। इट इज नॉट कि बस जस्ट प्रैक्टिस से हो जाता है बच्चों, इट इज नॉट लाइक दैट कि यू हैव टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स देन डेफिनेटली यू विल गेट सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन योर एग्जामिनेशन, ऐसा नहीं होता है जी, राइट। यू हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम द नोट्स ऑल्सो, राइट। आपको नोट से भी पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सारी चीजें आपको भी क्लियर होती हैं, राइट गाइस। ओके, दिस इज द शिफ्ट टू प्रॉब्लम। अब ये देखो शिफ्ट टू प्रॉब्लम में वापस से जस्ट कलर चेंज पूछा गया था, एंड गाइस इन दिस पर्टिकुलर केस यू कैन सी हियर आई हैव पुट अ पिक्चर ओवर हियर। मैंने एक पिक्चर भी रखा है, वाइन रेड से ब्लू हो जाता है, और ये बच्चों को मैंने पढ़ाया है विजन कोर्स के अंदर। ये विजन कोर्स के अंदर बच्चों मैंने कवर किया था बच्चों के लिए, राइट। एंड नो डाउट they have solved such type of problem, बहुत आसान था, टाइट्रेशन पे बेस्ड था, राइट। सिमिलरली लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू कैन सी गाइस ऐसा नहीं है कि सिर्फ विजन कोर्स से क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। आई विल शो यू दिस क्वेश्चन गाइस, इट इज ऑलरेडी कवर्ड इन माय रिवीजन प्रैक्टिस सीरीज ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो एवरी क्लास में मैंने कराई थी। यू कैन सी हियर दे आर जस्ट आस्किंग दी बैकवॉश वेलोसिटी। आपसे क्या पूछा जी, यहां पे आपके पास रिक्वायर्ड बैकवॉश वेलोसिटी कितनी है, and you can see here guys this is the problem of revision practice series of environmental engineering. Now you can see here guys we have calculated the backwash velocity over here. आप देखिए यहां पे मैंने backwash velocity calculate करके दिखाया है, how we can calculate such type of thing, and this is a numerical answer type question which I have put in my revision practice series itself. तो आप देखिए बच्चों यहां से भी हमने इस चीज को समझा कि नो डाउट वो प्रॉब्लम कितना आसान हो सकता था, and I have told all the concept over here, and this is a free class, not a paid class. This is a free class. Okay. Similarly guys, you can see here this is a grid chamber problem. ये grid chamber का एक problem था बच्चों, and it is again came in your shift 2 examination. shift 2 के अंदर आया था, और shift 2 के अंदर आने के बाद देखिए ये मैंने विजन के अंदर बच्चों, बेसिकली विजन कोर्स के अंदर यहां पर पूरा का पूरा ग्रिड चैम्बर जैसे डिजाइन होता है ना, आई हैव कंप्लीटेड all the concept over here. How you can find the size, how you can find the horizontal critical velocity, how you can find the settling velocity. ये सारी चीज मैंने बच्चों को यहां पे ही समझा दी, राइट। क्यों बच्चों, क्योंकि अगर क्वेश्चन सिर्फ एक चीज से आ जाता तो बात ही क्या हो जाती, क्वेश्चन आपके मल्टीपल कंसेप्ट से बन सकता है। तो आपको एक चीज पूरी क्लियर होना चाहिए कि कैसे ये करा जाता है, then only we are able to solve the shorter problem over there. हम छोटे छोटे प्रॉब्लम इनसे बना जरूर सकता है, मगर कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, ये मैटर करता है हम लोगों के लिए, ठीक है। ये देखिए बच्चों पूरा का पूरा कैलकुलेशन यहां पे पूछा था, एक इस क्वेश्चन के अंदर लेंथ पूछी थी आपसे, लेंथ कितना आएगा, राइट। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं यहां पे हमने क्या नहीं कैलकुलेट करा, सब कैलकुलेट करा है। यू कैन सी हियर दिस इज द लेंथ, दिस इज द हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल वेलोसिटी, टोटल लेंथ भी कितना होता है ये भी मैंने बताया है, एंड यू कैन कैलकुलेट द हाइट आल्सो, दैट वॉल्यूम आल्सो, विड्थ आल्सो। आप सभी ने यहां पे ये चीज समझी होगी, राइट। अब देखो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अगेन ये गेट 2021 का प्रॉब्लम है जिसमें कंबशन और पायरोलिसिस पे बेस्ड क्वेश्चन था, और ये वापस से नोट्स में से ही कंसेप्ट है बच्चों कि कंबशन क्या होता है, कंबशन इंसिनरेशन व्हिच इज इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम पायरोलिसिस की बात करें इट इज जनरली इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है। ये चीज मैंने बच्चों को डिटेल में बताई थी बच्चों, और नो डाउट आपको यहां से भी क्वेश्चन मिले, है ना। तो बच्चों
नो डाउट और भी क्वेश्चंस थे, जो अगर स्ट्रक्चर की बात करें, आरसीसी की बात करें, तो बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो नो डाउट हमारे कहीं ना कहीं कंसेप्ट और कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन से मिलते हुए, है ना। मगर ये सिर्फ मतलब नहीं है कि हमें आपको कुछ प्रूफ करना है। नो डाउट आप लोग हमारी एक फैमिली है और आप लोग हमें अपना मानते हैं, और नो डाउट बच्चों हमसे जितना हो सकता है हम आपको आउटपुट देने की कोशिश करते हैं, और हमेशा। और बच्चों मैंने लास्ट में भी यही कोशिश रखी कि आप लोगों के लिए वो न्यूली एडेड टॉपिक का तो सेशन लेके आऊं, और नो डाउट जिन बच्चों ने करा होगा ना, उनको शायद बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने 2 घंटे जिस दिन बिताए थे, उनके 2 क्वेश्चन शाम वाले पेपर में ही आए थे, है ना। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। और बच्चों अगर आप हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे फरवरी मेला अभी चल रहा है, जिसमें आपको 50% ऑफ मिलेगा, 50% ऑफ मिलेगा ग्रेडअप सुपर पे, तो आप लोग हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और नो डाउट बच्चों आप लोगों को यहां पर डिफरेंट टाइप के कोर्सेज मिलते हैं, लाइक विजन, रैंक अप, गियर अप, जिसमें आपको एमएसक्यू के क्वेश्चंस के भी लिए आपको डिफरेंट कोर्सेज मिलेंगे। और नो डाउट बच्चों और भी कंसेप्ट वाइज हमें कोर्सेज डेवलप करते रहते हैं। तो नो डाउट बच्चों आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे 50% ऑफ ले सकते हैं इस फरवरी के अंदर। अब कुछ बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ कितना जाएगा। देखो जी, अभी इस कट ऑफ को कमिट करना सही नहीं होगा। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा मेरी तरफ से कि मैं अभी कट ऑफ के बारे में अभी कुछ स्टेटमेंट नहीं दे सकता बच्चों, बिकॉज बिकॉज स्टिल वी नो हाउ वॉज द पेपर एग्जैक्टली। मतलब जो सारे क्वेश्चंस है ना बच्चों, एक अभी तो मेमोरी बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस है, नो डाउट। जब हमारे पास पूरे क्वेश्चंस की एनालिसिस हो जाएगी, अभी एक मॉडरेट है और बच्चों के हमें एक रिव्यूज की जरूरत भी होती है बच्चों, तब जाके हम कट ऑफ का कमिटमेंट कर सकते हैं। बट स्टिल गाइस इट मे बी अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 हम बोल सकते हैं इस रेंज में। बाकी मैं अभी कोई शॉर्ट ही नहीं दूंगा बच्चों कि इस रेंज में होगा, और कट ऑफ से कुछ नहीं होता है जी। लिसन केयरफुली, कट ऑफ से कुछ नहीं होता है। यू हैव टू स्कोर मोर ओवर देयर सो दैट यू आर एबल टू अचीव द पीएसयूज एज वेल एज द टॉप मोस्ट आईआईटीज, है ना जी। टॉप मोस्ट आईआईटी के अंदर अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए तो नो डाउट बच्चों आपको ये करना पड़ेगा। सो आई थिंक आपको ये फील आया होगा बच्चों, नो डाउट यू हैव फील समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेडअप। नो डाउट आपको बहुत फायदा मिला होगा। अभिनव सर, जोशी जी, अनिरुद्ध और शुभम जी, देन अंसारी सर, तो यहाँ पे सभी फैकल्टी से आपको पढ़ने के बाद बच्चों मजा भी आया होगा, और नो डाउट आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा। ठीक है। So getting 35.33 mark, what rank can I expect and gate score how much? They both, it is not possible to predict the rank as well as the gate score at this particular marks. It totally depend upon the both the level of exam, means paper 1 as well as paper 2, and how was the paper by the students. And it is not easy to predict such type of thing right now. Abhi nahi possible hai until unless we are not able to get the whole paper in exact manner by the gate, मतलब आईआईटी मुंबई से जब तक कि हमें एग्जैक्ट पेपर नहीं मिल जाता, वी आर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट एनी सच टाइप ऑफ थिंग। ओके, ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेरी गाइस, एनी अदर क्वेरी फ्रॉम योर साइड, देन लेट मी नो। कोई अदर क्वेरी आपके साइड से, देन लेट मी नो गाइस। सर लॉट ऑफ नॉइज इज कमिंग। ओहो, वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम स्टिल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे गाइस। आज के लिए इतना ही, और नो डाउट आप सभी को सभी फैकल्टी से काफी चीजें सुनने को मिली होंगी, और नो डाउट बच्चों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फरवरी मेला के साथ। सो साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर गाइस एंड गुड डे। होप यू आपका बहुत अच्छा रैंक मिले बच्चों लाइफ में, और आप बहुत अच्छे आगे जाएं और आपका मंजिल आपको मिल जाए। ठीक है, बट स्टिल वी आर हियर टू सपोर्ट यू ऑलवेज। हम हमेशा आपके साथ यहाँ पे हैं बच्चों, और आपको सपोर्ट करेंगे। Bye bye, take care and good day guys. Good evening everyone. Good evening everyone. कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? How you all are doing? Am I audible to you? Am I audible to you? कैसे हैं आप लोग? Okay. So भाई अभी जितने भी हमने क्लासेस ली थी, स्पेशली रिवीजन क्लास, क्योंकि जितने भी हम पढ़ाते हैं अपने क्लासेस में, तो बच्चों ऐसा हो गया कि हमारे साथ इस बार
स्पेशली इस बार जितने हमने रिवीजन क्लासेस लिए, सिर्फ मेरा नहीं, इंक्लूडिंग मी, all of us, whatever the classes we have conducted, so in on those class actually most of the questions came around. तो जिन लोगों ने classes attend की थी, those who have attended the classes, mostly I can say that if you count it, maybe 25 marks only, or 20 to 25 marks, or maybe 27 marks were from the revision class of all the grade of faculty from the civil engineering department, isn't it? So there's a post grade guidance series which is going to will start on 8th February, that is on 7 p.m. and Vision 2022 is going to start on 8th February. कुछ क्वेश्चंस मैं सिर्फ बताता हूं आप लोगों को जो हमने अभी रिसेंटली लिया था और आप लोगों को हिट हो गया वो, जैसे अभी लास्ट टाइम हमने लिया था रिवीजन क्लास में, ये ऑलमोस्ट मुझे याद है दिसंबर के टाइम पे हमने लिया था, ठीक है। तो दिसंबर के टाइम पर हमने जो लिया था उसमें मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मैंने पूछा था आपसे, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, और उस समय मुझसे कुछ स्टूडेंट ने भी पूछा था कि सर ये थ्योरी ऑफ एरर मैंने किया नहीं है, क्या करना चाहिए। फिर मैंने सजेस्ट किया था कि देखो क्लास मेरी कर लो, और ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ जैसे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, एरर प्रोपोगेशन, और एक सिर्फ वेट एलोकेशन कुछ कराया था मैंने, ये इतना करा के मैंने बोला था आप करो। अब देखो सेम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आ गया, यहाँ पर सेम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू पूछने के लिए आ गया। मैंने भी यहाँ वेटेज दिया था अलग अलग, यहाँ भी वेटेज था, यहाँ सिर्फ क्या हुआ मैंने एक एक्स्ट्रा किया हुआ था, कोफिशिएंट भी अलग से दे रखा था, ये भी दे रखा था, एंगल ए और 2A। तो यहाँ से थोड़ा सा आसान आया मेरा, बल्कि थोड़ा सा टफ था। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा है जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली किया। ये देख सकते हैं आप, ये वाला क्वेश्चन आपकी गेट में आया है, एरर दिया था इसने, ठीक है, लैटिट्यूड और डिपार्चर में, और इसने पूछा था कि क्लोजिंग एरर की लेंथ और बेरिंग क्या होगी। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन तो मैं हर क्लास में ही करा देता हूँ, मुझे लगता है हर क्लास में ही कराता हूँ ये क्वेश्चन। जहां भी मैं सर्विंग पढ़ाता हूँ, ट्रैवर्सिंग से रिलेटेड, वहां हर जगह कराता हूँ, ये मैं देता हूँ, ठीक है। देने के बाद में एरर निकाल के EXEY, बल्कि EXEY तो मैं खुद निकालने के लिए भी पूछता हूँ। EXEY निकलने के बाद I always used to tell how to calculate the length of the closing error as well as the bearing of the closing error, isn't it? So the whole circle bearing I always used to tell. So ये क्वेश्चन भी एकदम डायरेक्ट फॉरवर्ड है फ्रॉम our classes. Then if you remember it from the those who have attended my Truss structure analysis, that is gear up and rank up, those who have attended my gear up and rank up classes, जब भी whenever I used to take that truss problem, isn't it? In that truss problem I always used to say that कि magic section of magic, how to use it, isn't it? How to use the magic of section method. So your comments actually, once again I am not able to see, I can see only at one place only. So if you're liking this session, please write on some comments so that I can understand. Okay, now I can see. Whatever the comment you have, you can write down in a comment box. Okay, so what I was saying that this truss problem, this magic of section method, wherever I used to explain, in fact you can see this problem, right? This was I was explaining कि भाई whenever you have to take the section, the way you will take the section and where you have to stand. Now अब अभी आपको याद आएगा, मैं बताया था कि जब भी whenever you are taking the section, you stand in such a position where your unknown forces are meeting. If these two unknown forces are meeting at this position, then it will be convenient and easy for you to calculate the one unknown which has been asked. Do you remember that? In almost in all free and paid courses everywhere. अच्छा, ये सबसे interesting था. Revision class में I asked you to calculate the deflection, the horizontal displacement of A. Do you remember that? The horizontal displacement of A. ये horizontal displacement मैंने पूछा था, बल्कि अब जो आया था वो थोड़ा सा इससे आसान था, क्योंकि इसमें ये जीरो मेंबर फोर्सेस बनने के बाद में एक मेंबर बचता है सिर्फ, जिसके आपको स्ट्रेन एनर्जी निकालना था, और यहाँ भी मैंने आपको जीरो मेंबर फोर्सेस ही दिया था. What was the difference? The difference was only the truss was different. समझ रहे हो आप? Only the truss was different. Otherwise, if you see the same concept, same problem. Here also I have used the Castigliano. Here I also used the Castigliano. तो आप सोचिए ये वाला प्रॉब्लम जिसको भी मैंने कराया था,
I told you, you calculate the member forces, then after calculating the member forces, you calculate the strain energy, then after calculating the strain energy, partially differentiate it. Simply if you partially differentiate it, आपको क्या मिल जाएगा? Horizontal displacement मिल जाएगा, है ना? याद आ रहा है आपको? उसके बाद ये मतलब ये सब ये वाला भी बहुत रिसेंट आपका है, जो मैंने 25 जनवरी के आसपास मैंने रिवीजन क्लास में लिया था आपको। 25 जनवरी के आसपास मैंने लिया था ये क्लास, जो स्ट्रक्चर का रिवीजन मैंने लिया था, है ना? वो सारे के सारे जो मैं रिवीजन कोर्स बता रहा हूँ वो ग्रेडअप ऐप में लिया था मैंने। ये सारे कोई भी मैं यूट्यूब में इन क्लासेस को मैंने लिया नहीं है। फिर ये ट्रैवर्सिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था, ये आप देख सकते हैं, मैं हमेशा ये इंटरनल एंगल के साथ में ये करवाता हूं मैं जनरली, कभी भी किसी भी क्लास में जब भी मैं करवाता हूं। और यहां भी उसी तरह का सवाल आया था आपको कि ट्रैवर्सिंग आपका दिया हुआ था और साथ में इंटरनल एंगल दिया हुआ था। इंटरनल एंगल ट्रैवर्सिंग के साथ में आपको क्या करना था? सिर्फ और सिर्फ आपको नेक्स्ट लाइन का आपको बेरिंग निकालना था इंटरनल एंगल की मदद से। और ये लोकल, ये तो मैं छोटा सा बता रहा हूँ, इसके अलावा जो हम बड़ा वाला प्रॉब्लम भी कराते हैं उसमें भी हमारा काम ही क्या होता है? इंटरनल एंगल को ठीक करके बेरिंग निकालना सिखाता हूं मैं। अभी मैं वो क्वेश्चन को यहाँ लेके नहीं आया, ठीक है? इंटरनल एंगल को कैलकुलेट करके, करेक्ट करके, उसके बाद में क्या करते हैं हम, एक इनिशियल फॉर बेरिंग पता होता है और उसके बाद सारे लाइंस का, सारे ट्रैवर्सिंग लाइंस का क्या करते हैं फॉर बेरिंग निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एकदम सेम टाइप का है ना? रिवीजन क्लास में अभी रिसेंटली मैंने रेलवे का कराया था। रेलवे में मैं जब भी ये सवाल कराता हूं, आई यूज्ड टू टेल दैट कि whenever you have a speed, this is your equilibrium speed and this is the maximum speed and this is the minimum speed. Always used to tell, if you remember that, right? I always used to say all of you कि जब भी आपको कैलकुलेशन करना है, एक होता है आपका जो कंस्ट्रक्ट कराते हो आप, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, या तो इक्विलिब्रियम बोल लीजिए या कुछ भी। तो अभी इसने भी सवाल किया था ना कि आपको अगर 100 पे चलाने के लिए मैक्सिमम सुपर एलिवेशन पता है, साथ में आपको 80 वाले का पता है, तो ये डिफिशियंसी कितना होगा? मतलब जो बंदा 100 पे चल रहा था उसको कितने कम पे चलना होगा? याद आ रहा है आपको? जो बंदा 100 के एमपीएच पे इतने थ्योरेटिकल कैंट के साथ चल सकता है, उसको अगर आप इक्विलिब्रियम पे चलाएंगे तो उसके लिए यहाँ कितना कैंट का डिफिशियंसी होगा? क्या करना था आपको? सिर्फ यहाँ पे मैक्सिमम 100 स्पीड के लिए थ्योरेटिकल कैंट निकालना था, 80 स्पीड के लिए एक और कैंट निकालना था और दोनों को माइनस कर देना था और बताना था कि हाँ कितनी कैंट की डिफिशियंसी है यहाँ पर, isn't it? और ये मैं फिर से रिवीजन क्लास में मैंने ये वाला लिया था, आप देख सकते हैं। ये जब मैं लिया था तब भी मैं समझा रहा था इन चीजों को कि मैक्सिमम वेलोसिटी वाले को आप उतार के ले आओ यहाँ पे और उसको चलाओ, उसके लिए इतना कैंट का डिफिशियंसी होगा। ये है कि वहां पे मैं कैंट की डिफिशियंसी बता रहा था कि मैक्सिमम कंसीडर कर लो। यहाँ पे इसने पूछ दिया है कि जो चल रहा होगा 100 पे उसको कितनी कैंट की डिफिशियंसी रहेगी, है ना? ये प्रॉब्लम तो एकदम सॉलिड, जैसे मैंने पूछा था वैसे ही आ गया ऑलमोस्ट लग रहा है। ये आपको याद होगा, ये 25 दिसंबर के आसपास या 22 या 23 दिसंबर के आसपास जब रिवीजन बैच में चला रहा था, वो भी फ्री क्लास में सॉइल के फ्री क्लास में रिवीजन सेशन में नॉर्मली कंसोलिडेट ओवर कंसोलिडेट के लिए ये कर्व का वेरिएशन मैंने स्पेशली करवाया था और इसमें बहुत सारी बातें, और ये वाला भी समझाया था मैं, वो अभी लेके नहीं आया ये वाला भी कर्व मैंने समझाया था। और इनफैक्ट जिन लोगों ने पेड कोर्स किया उनको तो बहुत डिटेल में ये अच्छे से समझाया हूँ, चाहे रैंक अप हो या गियर अप हो, जिन लोगों ने किया था वहां ग्रेडअप के ऐप पर। अच्छा, ये रिसेंटली अभी मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाते हुए समय ये इस तरह के प्रॉब्लम्स को मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डील किए हैं, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम डील किए हैं। कर्व सरफेस पर जो फोर्सेस लगते हैं, इनफैक्ट यहाँ आप देखेंगे तो वाटर और ये तो जी अलग अलग है ना, दो साइड से, ये तो फिर भी थोड़ा आसान है बताना। यहाँ मैंने तो सेम अलग अलग लेयर बना के भी क्वेश्चंस करवा रखा था। कैन यू सी दैट? अलग अलग लेयर बना के भी मैंने करवा रखा था कि दो अलग अलग फ्लूइड अगर एक साथ में है तो उस समय कितना फोर्स लगेगा उस पर्टिकुलर कर्व सरफेस पर, ठीक है? तो बहुत सारे सवाल थे। हमें एक्चुअली क्या है कि हम तो कितना सवाल ढूंढेंगे जो पेड कोर्सेस हैं या जो फ्री कोर्सेस हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेस भी हम लेके आते हैं जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो। पर हाँ, एक बात की गारंटी दे सकता हूं, जब इंजीनियरिंग सर्विसेज की फिर से का एग्जाम आएगा उससे पहले हम फिर सीरीज लाएंगे और आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट कि जब वो सीरीज में लाऊंगा आई विल वर्क ऑन इट सो दैट you will be benefited most, you'll get the most benefit from that particular series. So wait and watch, all of you, wait and watch. So thank you everyone for watching this video.
तो हमारे ग्रेडअप की टीम ने जितना भी मेहनत किया, चाहे रिवीजन सीरीज से रिलेटेड हो या सवाल से बनाने से रिलेटेड हो, आई थिंक यू गॉट द बेनिफिट फॉर दैट। और ये हमारा लाना क्या मतलब था आप भी समझते हैं। सो यू ऑल ऑफ यू जस्ट टेक केयर एंड हियर इज द February मेला and there are a lot of exciting prizes we have, right? Then all the experienced faculties are always conducting the class and they are the star of the Gradeup Super. This is one of the best features provided by the Gradeup, where with the one super you can get all the structured live courses as well as the green card. Thank you all of you. Good night, take care. Good night, take care. Shabba khair. Next time, just you please go to the Gradeup app. Go to the Gradeup app and download or see, watch all the videos there, whatever they are